ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଥିବା ତ 3 days to see ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଦୁଇଟା ବିଷୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଆସିବ ଆମର ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 3 ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଆମର 3 days to see ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଏ ବିଷୟଟି ତୁମେମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ବୁଝି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଜାଣିନେଇଥିବ କି ଏ ବିଷୟଟି କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଲେନ୍ କେଲର, ଯିଏକି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଡେଫ୍ ଥିଲେ। ସେ 3 ଦିନର ଟ୍ରାଏ ମାଗିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋତେ 3 ଦିନ ମୋତେ ଆଖିରେ ଦିଆଯାଏ ସେ 3 ଦିନ ଆଖିରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ କାହାକୁ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ 3 ଦିନ ଆଖିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଥିବ ପ୍ରଥମ ଦିନ 3ଟା ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ କହିଛନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, देखा है तुमर दोज काइंडनेस एंड कंपानियनशिप हैव मेड माय लाइफ वर्थ एंड लिविंग से देखापी कहते। नेक्स्ट डे से क्या देखापी कहते ना बिहुल जो मैंने रही लोक मैंने जो नेचर को देखा चाहते, एनिमल म्यूजियम विभिन्न प्रकार पशु पक्षी को देखा चाहते। तापर से थर्ड डे कौन देखा चाहते ना बिजी वर्ल्ड रे थिबा सब लोक मैंने केमी डेस्टिनेशन पहुँचती, केमी बिजनेस कर वर्क लोड केमी रोचे से वर्डटा को देखा से चाहते, से समयटा को से जानवा चाहते। 3टा डे उपर से फोकस कर। आज आस आमर लेट अस डिस्कस रे थिबा क्वेश्चन आंसर टी को हम डिस्कशन करिबा। वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू फ्रॉम द वंस गिवन बिलो, शेयर योर आंसर्स विथ द टीचर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आसीबो, द ऑथर एक्सप्रेस ए डीप लॉन्गिंग टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द साइलेंस ऑफ सेंस ऑफ हियरिंग। देख पिला मैंने ये जो सेंटेंसटा अच्छी यहाँ मोर फल्स अच्छी कहीं ना तार एक्सप्लेनेशनटा भी तले दिखाई तुम देखिपो ना द स्ट्रंग विश इज टू सी द वर्ल्ड ऑल्दो अदर सेंस सच एज हियरिंग टच एंड स्मेल आर वैल्यूड द डीपेस्ट लॉन्गिंग इज टू लुक एट द पीपल नेचर एंड द सिटी एंड टू विटनेस देयर ब्यूटी एंड एक्सप्रेशन। एठी जो तुम क्वेश्चन टी सी बेसी एम्फासिस देते हियरिंग उपर ना, एठी से एम्फासिस हियरिंग उपर दे ना देखा उपर से फोकस कर जोटा कि से चाहते लुक एट द पीपल नेचर एंड द सिटी उपर फोकस से कर। आस जा यार सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन टी कौन तुम आसो, सेकेंड क्वेश्चन दूची द ऑथर वुड लाइक एक्सप्लोरिंग द सिटी थ्रू टू ओनली टू ऑब्जर्व द हाउ पीपल आर सफरिंग देची ओनली जो देख मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन तुम ओनली थी से क्वेश्चन ही मे भी भूल हम देखो केमती देखिए द ऑथर वुड लाइक एक्सप्लोरिंग द सिटी ओनली टू ऑब्जर्व हाउ पीपल आर सफरिंग। केवल से कौन चाहूले कि लोक मैंने किपर सफर हे तो जानापी ना, से कौन केमती चाहूले ना से चाहूले कि हेलेन केलर वांट्स टू एक्सप्लोर द सिटी टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव देयर डेली लाइव्स and she mentions seeing smile, determination and suffering. The focus is not only suffering but on observing the complete human experience. है से केवल सफरिंग उपर फोकस कर से फोकस कर देखो तुम स्माइल डिटरमिनेशन ए उपर से फोकस कर। क्वेश्चन नंबर थर्ड को। थर्ड क्वेश्चन आसूची द ऑथर वुड स्पेंड द फर्स्ट डे सीइंग द पीपल हुज काइंड हार्टेडनेस एंड फ्रेंडशिप हैव एनरिच्ड हर लाइफ। ये ट्रू अच्छी कारण आम फर्स्ट जानले जो प्रथम दिन आखिरे दिज्व से कौन देखा चाहती ना हेलेन केलर क्लियरली स्टेट्स सी वुड स्पेंड हर फर्स्ट डे सीइंग हर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस हुज काइंडनेस हैज मेड हर लाइफ मीनिंगफुल। सी वांट्स टू लुक इनटू देयर आईज एंड फेस व्हिच सी यूजुअली फील्स थ्रू टच जोटा कि से माने स्पर्श कर जानूले से चाहूले जदि आखि गोटे दिन दिज्व से प्रथमे लव्ड वन को से देखिए बोली है। स्टेटमेंट आम ट्रू अच्छी। दिवा क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 टी कौन आस देखो ना द ऑथर एक्नॉलेज दैट इवन इन 3 days सी वुड नॉट बी एबल टू सी एवरीथिंग। देख जिते थर्ड दिन आसीगला ये से देखी पार ना
ए स्टेटमेंट आम ठीक अच्छी ना सी आडमिट्स दैट 3 days आर टू सर्ट टू सी एवरीथिंग सी वांट से चाहिए कौन 3 day बहुत छोट माने बहुत कम समय कम ड्यूरेशन से जहाँ चाहूँ सब देखापी सी सेज ओनली आफ्टर डार्कनेस रिटर्न्स विल सी रियलाइज हाउ मच सी मिस्ड से चाहते जी से जिनस को से मिस कर जस्ट से देखापी तापर आम जा क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 5 कौन देखे देखा द ऑथर फील्स दैट एवरीवन कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट जॉय मियरली बाय द सेंस ऑफ टच एटा फॉल्स अच्छी देखिए ऑथर फील्स दैट एवरीवन कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट जॉय मियरली बाय द सेंस ऑफ टच केवल टच करके जने सब जॉय पाइपर सेटा नुह ऑल्दो सी फाइंड्स जॉय इन टच सी क्लीयरली सेज दैट sight is the most delightful of all the sense. She believes it brings the most beautiful and understanding of the world. देख जदिव एटार से कवि लक्ष्य कर टच द्वारा से किसी जय पाई पार्ची किंतु ता भी मध्य लिखिंट से ब्यूटीफुल ऑल सेंस उपर से दृश्यटा को अधिक एम्फासिस देइचंती देख क्वेश्चन नंबर 6 जा द ऑथर एडवाइस दोज हु कैन सी टू एप्रिशिएट एवरी मोमेंट एज इफ दे माइट लॉज देयर सेंस टुमोरो अर्थ कौन सजेस्ट करते अर्थर कहते देखिए से विषयटी जो आम पढ़व तुम्हें भलसे बुझ अर्थर कहते माने गड न करंतु तुमर कौन अंग के खराब हो जाओ माने सही पर्यंत तुम्हें काम कौन कर कि तुम पाखर जी टाइम पाउच देखापी तुम्हें पृथ्वी को देखीज ताकू एंजॉय कर ये स्टेटमेंट ठीक अच्छे ना स्ट्रॉन्ग मेसेज इज गिवन टू यूज ऑल द सेंस फुल्ली पीपल आर आस्क्ड टू सी हियर टच टेस्ट एंड स्मेल एवरीथिंग एज इफ दे मे नॉट हैव दिस सेंस टुमोरो दिस टीचर्स अस टू वैल्यू व्हाट वी हैव एठी माने हमर अर्थर कहा पर बेसी फोकस करछंती ना आम पाखरे जहाँ अच्छी ताकू तुमे वैल्यू दियो हला क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा देख क्वेश्चन नंबर 7 कौन अच्छी ऑन द थर्ड डे द ऑथर वुड लाइक टू ऑब्जर्व पीपल इन देयर डेली लाइफ्स एंड अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंस ये ठीक अच्छे ट्रू अच्छे स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन कौन आसो इट इज स्टेटेड दैट सी वुड स्पेंड हर थर्ड डे इन द सिटी वाचिंग पीपल एट वर्क एंड इन डेली रूटीन्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर लाइफ्स थ्रू देयर एक्शन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशंस एंड देयर इंटरेक्शंस बर्तमान क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विथ व्हाट हेलेन किलर वांटेड टू डू ऑन द 3 days इफ सी हैड साइट जदि ता पाखर मान देखिबार शक्ति था से प्रथम दिन कौन देखा चाहिए से डे 2 रे कौन देखा चाहिए डे 3 रे कौन देखा चाहिए आम देखा आस बर्तमान एक्सप्लेन करवा डे 1 कौन देछि आस देख देखिए डे 1 से फोकस करची सी द पीपल नो हर फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेस यूज काइंडनेस कंपेनियनशिप एंड एनरिच्ड हर लाइफ एटा डे 1 तुमको देला डे 2 रे कौन देछि आस देखिबा डे 2 रे देछि arise with the dawn observe the transmission of night into day visit museums to see earth history and man's progress डे 3 रे कौन देछि ना ऑब्जर्व पीपल इन देयर डेली लाइफ्स अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंस बाय साइट एक्सप्लोर द वर्क ए डे वर्ल्ड देखिबा let us think and reflect read the extract given below and answer the questions that follow I feel the delicate symmetry of a leaf I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver bridge or the rough saggy branch of a pine in spring I touch the branches of trees I hopefully in search of a bond the first sign of awakening nature after the winter's sleep occasionally I am very fortunate I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song how many times the word I is used in the passage ए जो passage रे हमें देखिले तो केते टाइम the word I टा यूज करा है देखो 1 2 3 4 and 5 लिखिबो कोन तुम लिखिबो एबे देखिबा मुझे लिखि दूची तुम टिके लिखि नब
The word I is used 5 times in the passage. The word I is used 5 times in the passage. ଯିବା the word I refers to the dash ଏଠି ଯେଉଁ word ଆମେ I ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ସେଟା I କାହାକୁ refers କରୁଛି ନା author. ତାପରେ complete the sentence appropriately. The phrase awakening nature after the winter sleep. ୱିଣ୍ଟରର ଯାଇସାରିଲା ପରେ କିଏ ଆସିବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ନା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ. ଦେଖ question number 2. The next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with the away of magnificent phenomena of light with which the sun awakens the sleeping earth. This day I should devote to a hasty clippings to the world as past and present. I should want to see the present of man's progress, so I should go to the museums. The word thrilling has been used with miracle. Which of the following words does not match the word thrilling? thrilling ସହିତ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ, ତାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? knowledge. ଦେଖ question number 2. Why does the author refer to the earth as sleeping earth? କାହିଁକି ଲେଖକ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ earth as sleeping earth? आंसर देखो. Now the phrase sleeping earth suggests that a night nature is quiet and still, as if the world is resting. Dawn brings light and activity that wake it up. Question number 3 को आसीबा. Complete the sentence with an appropriate reason. The writer wishes to dedicate the day to a brief look at the present and past world because she wants to visit museum to learn about the human progress and quickly see how people and civilization have changed over time. Question number 4 को आसीबा. Why does the writer use should multiple times in the extract? आम जो extract पढ़ले देखिबो shouldटा बारंबार माने यूज कराई. कहीं यूज कराई ना the writer use the word should to express the wish and planned action, indicating what she would like to do if she had the chance to see. It shows intention, desire and a careful plan. Answer the following questions. The sense of touch makes up for the loss of sight and hearing. Explain this statement which refers to the test. The author relies on touch to learn about people and nature. He feels her friend's face to sense their emotion. Touch leaves and tree bark to know their texture and can feel birds quiver. This tactile experience gives her information and comfort with sight and hearing are not available. बुझा. Why does the author believe that sense of sight is the most wonderful? The author believes sight is the most wonderful sense because it reveals colors, face and experience that show beauty and meaning. Sight allows direct observation of people and place in ways other sense cannot fully replace. देख एटी अर्थर आमको कौन कहते ना जड़े जितेबाला साइट देखो से कलर ता साइज को देखिकी से एंजॉय कर जोटा कि टच द्वारा से हो पार ना है। क्वेश्चन नंबर 3 को आम जा.
How might the author's opinion on making most of our sense guide us to be kinder towards people with special abilities? This view encourages us to value our own sense and to recognize the effort of people who live without some of them. The awareness promotes respect, patience, and practical help so that persons with special abilities can participate fully and with dignity. देख आम जो विषयटा को हेलेन किलर पढ़ले आमर गोटे माइंड मैप तैयारी होगला जे देखी न पार्थो मान स्पेशल डिजेबिलिटी जे थिबो ताकू आमे रेस्पेक्ट दबा तांको हेल्प करबा एवं सी आमर जो प्रकार राइट अछि कोनोसी क्लास रे बसया पई कोनोसी ओपिनियन देबा पई कोनोसी एग्जाम देबा पई सेमानंकर मध्य से परि माने राइट अछि देख आमे तांको तांकर कोनोसी जिंस को नै ता थट्टा मजा केबे करबा नाही कि तांकर मजा को उड़ाइबा नाही एटारो हमको माने विषयटी रे एम्फासिस दिया जाय छै तापर जिबा में क्वेश्चन नंबर 4 आसुचे जोटा हमरो What is the significance of imagining the loss of a sense according to the author? Imagining the loss of a sense helps us understand its true worth. It makes us feel grateful and prompts us to pay closer attention to and enjoy what that sense allows to experience. ଏହା କ'ଣ କହିଛି ନା ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇକି ତାର ଠିକ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଆମେ କରିବା क्वेश्चन नंबर 5 को वर्तमान ଯିବା How does the author encourage people to approach their everyday sensory experience? People are urged to see all their senses fully to see, hear, touch, taste and smell. They should savor each moment as if those senses might be lost tomorrow, ensuring they are not taken for granted. ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦିଆ ଯାଇ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଲିମିଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ଯାଇଛି ତମର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କର ଭାବନି ଯେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ କିଛି ହେବନି ମେ ବି କିଛି ନ ହଉ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ତୁମର କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉ କି କିଛିରେ ତୁମର ମାନେ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନର କ୍ଷତି ହଉ କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6 କୁ ଆସିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଦ ଅଥର୍ସ ଚୋଜ୍ For the 3 days tell us about her value and priorities. Her choice shows that she values personal relationship and affection on the first day, learning and human achievement on the second day, understanding ordinary people's lives on the third day. She prizes friendship, नॉलेज एंड एम्पैथी से क्या मैंने अधिक प्रायोरिटी देते 3टा डे को आम सर्ट कर लिखा फास्ट डेटा क्या फोकस कला लर्निंग एंड ह्यूमन अचीवमेंट उपर सेकेंड डेटा कौन कला अंडरस्टैंडिंग ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ्स ना सॉरी देख फास्ट डेटा क्या कला पर्सनल रिलेशनशिप एंड अफेक्शन सेकेंड डेटा से क्या अधिक फोकस कला लर्निंग एंड ह्यूमन अचीवमेंट एंड थर्ड डेटा क्या कला अंडरस्टैंडिंग ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ्स देखो सेंसरी वर्ड्स आर descriptive. They describe how we experience the world, how we see, smell, hear, smell, taste or feel something. Complete the following table with the sensory words from the test in column 2 from the 5 sense column 1. Add new words. देखो what we see, what you hear, what you smell, what you taste, what you feel. तार कौन आसीबो पनोरमा म्यूजिक परफ्यूम रिलैक्स रफ एगुड़ाक तार फेर कौन आसो देखिपे तुम्हें भाइब्रेंट रेजलिंग इको थंडर आरोमा फ्रेग्रेंस टांगी टाजी स्वीट सिल्क सॉफ्ट Read the following sentence from the text and underline the verbs. आमे भर्ब को अंडरलाइन क्या करबा पूर्वर आमे जानिबा प्रथमे व्हाट इज भर्ब ना भर्ब इज ए एक्शन वर्ड एंड व्हिच रेफर्स टू द एक्शन व्हिच डन बाय ए पर्सन और एन एनिमल देखो आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स अच्छा अंडरलाइन करबा
verb के आसीबो should devise on the first day I should want to see verb के आसीबो want to the next day I should arise with the dawn verb के आसीबो should arise I should behold एगुडा आसीला verb देखो the words you have underlined are combination of two words in each of this sentence should is the modal verb suggestion and the second verb divide want arise behold is the main verb modal verb कौन Now, modal verbs are auxiliary verbs that express necessity, possibility, permission, ability. They are used before the main verb to give the addition information about the function of the main verb. Common modal verbs include can, could, may, might, shall, should, will, would, or must, and ought to. देखो आम बर्तमान भर्बर फैमिली भितर को जीवा फैमिली चार्टा भलसे बुझे ये बहुत इंपोर्टाट तुम देख गोटे सेन्टेन्सर दुई प्रकार भर्ब रही गोटे गला फुल भर्ब गोटे मेन भर्ब जोटा कहते जोटा कि सेन्टेन्सटा निजे के रही पार सेन्टेन्सटा निजे रही जोटा गोटे प्रकार देख गोटे सेन्टेन्सरे जदि गोटे प्रकार भर्ब अच्छी सेटा हम धर सेटा हम मेन भर्ब आउ जदि सेन्टेन्सरे दुईटी भर्ब अच्छी तार गोटे मेन भर्ब हम आउ गोटे ऑक्सिलरी भर्ब हम देख ऑक्सिलरी भर्ब पुणी दुई प्रकार गोटे प्राइमरी ऑक्सिलरी गोटे मोडाल ऑक्सिलरी देख प्राइमरी ऑक्सिलरी पुणी तीन भाग विभक्त कराला गोटे बी ग्रुप गोटे डू ग्रुप गोटे हैव ग्रुप देख आम बुझे बी ग्रुप्र कौ मैंने जी बी ग्रुप आसबे बी ग्रुप्र कौ मैंने आसबे प्रथम आस देखीदे बी ग्रुप आसबे एम इज आर वाज वेयर बी बीइंग बीन एमाने गले सबू बी ग्रुप रे देख जैसे देला प्राइमरी ऑक्सिलरी आसीबो बी आसीबो बी लिखाई थी कि ना बी आसीथिबो मे बी हेटी एम और इज और आर वाज वेयर बी बीइंग बीन ए सब लिखा जाइथिबो तापर आसीबा डू अच्छी तापर डू डू रे कि आसीबो से देखिबा डू ग्रुप को माने जाउचंती डू ग्रुप रे जिवे डू डज डिड एगुडी को जिवे डू ग्रुप रे हैला बुझी हैला तापर जिबा हैव ग्रुप रे के जिबा सो देखिबा हैव ग्रुप रे आसीबो हैव हैज और आसीबो हेड हैव हैज हेड बर्तमान जो मुझे लिखिली बी डू हैव एटा को भल भाव तुम लिखिक प्रैक्टिस कर कारण केवल जो प्राइमरी ऑक्सिलरी कहीदेले बी लिखाई कि डू लिखाई बी जगह एम इज आर वाज वीआर बी बीइंग बीन लिखा जाइथिबो डू बदल डू लिखाई डीज लिखाई डज लिखाई और हैव बदल हैव हैज और हेड भी लिखा जाइथिबो आशा कर बुझीपार तापर आसवा आम मोडाल ऑक्सिलरी को देख मोडाल ऑक्सिलरी आम केतोटा अच्छी 13टा ये 13टा को सब पूरा मन रखी देथिबो कौन कौन विल वुड शैल शुड मे माइट कैन कोड केतोटा हला एठी हला 8टा विल वुड शैल शुड मे माइट कैन कोड मस्ट डेयर नीड ऑट टू यूज्ड टू एठी केतोटा हला सॉरी एठी केतोटा हला हमरो 5टी 5 8 केते हला 13 मस्ट डेयर नीड ऑट टू यूज्ड टू हला बुझी हला Identify the modal verbs in the following sentence. Choose the functions the express form is given in the box below. Possibility, necessity, polite request, ability, moral, obligation. एठी जो हम सेंटेंस गुड़ा देखिबा तार मोडाल ऑक्सिलरी को अंडरलाइन करिबा आ एटा कोन पे यूज करा जाय देखिबा हमको मेन वर्ब को अंडरलाइन करिबा को कुआ है नाही देखो यू कैन लर्न ए लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस यार आसब किए मोडाल ऑक्सिलरी कैनटा ये कौन पे यूज कराई ना एबिलिटी ये कौन लिखब एबिलिटी लिखाई एबिलिटी तापर आसबे दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक तार मोडाल के आसब माइट कौन पे यूज कराई माइट ना पॉसिबिलिटी POSSIBILITY पॉसिबिलिटी
टूटा आसला पॉसिबिलिटी, वन आसीथिला एबिलिटी। तापर जिबा दे सी मस्ट फिनिश हार होमवर्क बिफोर डिनर। तार मोडल ऑक्सिलरी एटार किए आसीबो मस्ट कौन पे यूज करा है नेसेसिटी एटा आसीबो 3 नेसेसिटी। दे ऑट टू अपोलाइज देयर मिस्टेक तार यार ये आसीबो कि आसीबो कहिलो मोडल कि आसीबो ना मोडल आसीबो ऑट टू एटा कौन पे यूज करा है ना मोरल ओब्लिगेशन 4 आसीबो। तापर आसीबो सी वुड लाइक टू हैव सम लस्सी प्लीज तार किए आसीबो मोडल ऑक्सिलरी वुड एटी कौन पे यूज करा है ना पोलाइट रिक्वेस्ट से ताको रिक्वेस्ट करी कहला हला। वन आसीबो एबिलिटी, टू आसीबो पॉसिबिलिटी, थ्री आसीबो नेसेसिटी, फोर आसीबो मोरल ओब्लिगेशन, फाइव आसीबो पोलाइट रिक्वेस्ट हला। Read the situations in column 1 and functions in column 2. Fill in the blanks in the sentence in column 4 with appropriate modal verbs from the given column 3. After filling the blanks, teacher asks groups and allows the student discuss the function of the each modal. देखो ये तो मोर सब दे देछि column A, column 2, column 3 रे सब दे देछि। You want to leave work earlier, you have an important deadline tomorrow, your friend is thinking whether to join art class, there are dark clouds in the sky, asking someone to pass the salt at the dinner table, advising someone to apologize for a mistake, deciding whether go for a picnic। तापर तार कॉलम 2 रे परमिशन, ओब्लिगेशन, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, मोरल ओब्लिगेशन सजेशन दे देछि। एटा हमको क्वेश्चन देला हला। कॉलम 4 कोन देछि क्वेश्चन करिवो सेटा तार आंसर कोन आसीबो। कॉलम 3 रे देखो तार मोडल गुडा को दे देछि। हम एठी करेक्ट मोडल टा को यूज करबा। क्वेश्चन 4 रे प्रथम कोन मोडल आसीबा से देखिबा। Dash I leave early today if I finish my tasks. You want to leave work earlier. परमिशन मागुची एठी कोन आसीबो मोडल ऑक्सिलरी आसीबो मे MAY हला। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा। I dash finish this report by tomorrow. I must MUST हला। तापर गला योर फ्रेंड इज थिंकिंग व्हेदर यू जॉइन आर्ट क्लास, एडवाइस तार आंसर कोन आसीबो यू डैश कंसीडर ऑल द प्रोस एंड कॉन्स बिफोर मेकिंग डिसीजन आसीबो यू शुड। तापर आसीबो 4 टा कोन आसीबो आई डैश लर्न लेटर टुडे में डैश यू पास द सॉल्ट प्लीज कोड। तापर आसीबो you dash apologize for the mistake you made तार आंसर कोन आसीबो ought to। you dash go to any park nearby for picnic, you can। देखो let us listen, you can listen to conversation between mother and son, you can listen the select towards false ला। पढ़ देखिबो अनुजा finds the concept of very fascinating and wants to learn more about this, false। mother is unsure of the school's effort to include students with visual impairment, false। Anuja initially thinks that digital India is only about learning how to use computers. 2. Modal believes that screen readers are very effective for persons who are visually impaired. True.
Anuja already knew that persons who are visually impaired can use computers and smartphones. False. So number three. Anuja wants to know about the effectiveness of assistive technology for persons who are visually impaired. Here ଆସିବ true. ତାପରେ ଦେଲା Modal believes a right mindset is the best support for persons who are visually impaired. True. ତାପରେ let's speak. ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ ତୁମେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଏଇଟା ଲୁଇସ୍ ବେଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ଦେଖିଦେବ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଲି ରେଟର ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିବ। ଏବେ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରାଗଲାଣି। आशा करी भिडियोटी तुमମାନଙ୍କୁ बहुत भल लगी जदि यहीपरि भिडियो तुम मैंने आगे देखा चाहूँ मत कमेंट माध्यम निहाती जन।